I want to learn English in 4 months. I want to improve English in 1 month. I want to learn English in 1 week. I want that when I awake next day and I start speaking English. Assalamualaikum viewers, how are you? Hope you are fine. Previous night I received a message from one of my good friends. He asked me about Ahmad, I want to be fluent in English. What should I do? How much time will it take? कितना वक्त लगेगा? I simply replied it will at least take 3 months, minimum 3 months. Then the conversation discontinued. So upon that question, I thought to make a video, and this video will help you out and to understand how we can learn English in a short span of time. कम टाइम में, कम वक्त में हम किस तरह ज़बान सीख सकते हैं. So welcome to the video. This is Mohammad Ahmad, your guide as you are a language student. Today our topic is according to the question what my friend asked me. How should I improve or how I can become fluent in English? So for that you have to understand the phenomena, you have to understand the concept. आपको समझना पड़ेगा कि language है क्या. Today I have got a topic for you: 4 domains of English. Domains, easy word, easy meaning, you can say 4 areas of English, 4 aspects of English, or pillars of English. ठीक है, is they are synonyms. So किसी भी ज़बान में हमारे पास मुख्तलिफ डोमेन्स होते हैं, एरियाज़ होते हैं, एंड जिससे मिलाकर जब उन तमाम डोमेन्स में काम करके ही हम किसी ज़बान में इफ़ेक्टिव या एफिशिएंट हो सकते हैं. So let's check it out what it is about and how we can cope up with that. किस तरह हम इसको इससे जो है कवर कर सकते हैं और make our English effective and become fluent or become expert in English, so on and so forth. So my dear students, my dear friends, for a language you must know, किसी भी ज़बान के लिए आपको मालूम होना चाहिए, लाजमी मालूम होना चाहिए that there are different areas. Language is not you don't learn language in a go. एक बार में आप नहीं सीख सकते, ठीक है. You work on that and then ultimately you learn that language. What are those 4 areas? Number 1 is listening, speaking, reading and writing. Please repeat after me. Listening, speaking, reading, writing. Please read one time by yourself. Okay. This drill, this practice what I did with you, करने का मकसद ये है कि आप इसके दिमाग में ये बैठे कि किस तरह क्या तरीक़ाकार होता है ज़बान सीखने का. Normally students are unaware of that, नहीं मालूम होता. So I thought that you must know it first, and then it will be easier to learn English. Before moving towards the explanation how we can do that, I must share one idea that my dear students, my dear viewers, language is a process. We learn any language, किसी भी ज़बान को हम एक process के ज़रिए सीखते हैं. We don't learn in a language in a day or in a month or a year or years. I must say that since our birth, since childhood, we start learning English and till the last day of our life. बंदा जब जो है दुनिया में होश संभालता है उस वक्त से अपने आखिर वक्त तक ज़बान सीखता है, और कभी भी कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता है कि मुझे ज़बान मुकम्मल आ गई. We just keep on improving that. हम इसे improve करते हैं by different practices, by different activities. Fine. So let's head to the topic. How it works, किस तरह ये काम करता है. I will not go in detail, then the video will become lengthier. Very short example I will give here as a child. Just give the example of a language. हम
किसी भी घराने में पैदा होते हैं, चाहे हम किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं या किसी भी ज़बान बोलने वाले इन्वायरमेंट में पैदा होते हैं, और अल्टीमेटली हम ये नोट करते हैं कि जिस माहौल में हम होते हैं हम वही ज़बान बोलते हैं, आइदर दैट इज़ इंग्लिश, उर्दू और अदर लैंग्वेज, any other language, right? So that is natural. And how it happens? It happens due to a process. What is that? It is said that ये कहा जाता है कि if you want to become a good speaker, अगर आप एक अच्छा speaker बनना चाहते हैं तो you have to become a good listener. For listening, I have mentioned, I have just got the word L, and for speaking, I am taking the word letter S. So if you want to become a speaker, you will have to listen. अगर आप एक speaker बनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा, सुनना शर्त है. Same like that, if you want to become a good writer, you want to be good at writing, you will have to read. So reading is a condition to become a good writer. Speaking, listening is a condition to become a good speaker. Right? So it is said like leading leads to speaking. Speak up. Reading leads to speaking. Leading जो है हमें ये जो रास्ता है, listening का जो रास्ता है, सुनकर हम अच्छा बोल सकते हैं. We have to try for that, right? It's not directly you just keep on listening and you don't start speaking. You have to try. हर चीज़ के लिए कोशिश जरूरी है ना. That is a common sense. Leading leads to speaking. Listening leads to speaking. Listening का रास्ता आपका speaking के तक ले जाएगा. And reading leads to writing. और reading का रास्ता reading करके आप अच्छे एक writer बन सकते हैं. And that is a process. That is basically the way you can become a good speaker or good writer. You can say this is an input or this is output. Or this is input or that is output to understand. For the sake of understanding, समझने के लिए. Alright. Now let's come. I'll just make it. I have explained it, and you will think that बस ये तो मुझे मालूम था. इसमें अब करना क्या है, solution क्या है. So let's talk about the solution. हमें क्या सुनना चाहिए? If you are a kid, अगर आप बच्चे हैं, you are a student of school, standard 7, 4, 5, 6 स्कूल के स्टूडेंट हैं, or you are a student of intermediate, you are doing graduation, or you are a master's student, you are a job person, you are doing job at a firm, or you are working in a factory. It doesn't matter, fine. Everyone can learn any language. English is not a big deal. कोई भी ज़बान आप सीख सकते हैं. Either you belong to any sector, either you belong to any age group, किसी भी age group में हो आप, क्या either you are a male or female, it doesn't matter. English is a language. English सिर्फ एक ज़बान है, और हर वो शख्स इंग्लिश सीख सकता है जो कोशिश करे. It's my belief, ये मेरा यकीन है, and it's my firm belief, and it has been it has been my experience. I have been teaching students and guiding students, and I have observed and experienced that anyone can learn and anyone can speak. If I can speak, if I can learn, then what's the big deal with that? So listening. What is listening? Listening means you just have to listen. सुनना, ठीक. So what to listen? क्या सुनना चाहिए? Normally people say you should listen movies. I mean you watch movies and listen the dialogues. It does not always work. If for example, if I'm talking about a kid, बच्चे जो है वो मूवीज़, इंग्लिश मूवीज़ देखें और वो समझ जाएं पहली बार में या दूसरी बार में, बार बार देखें. Sometimes parents do not allow their children to watch the movies. So movies are basically you give more of the time ज़्यादातर जो है लोग मूवीज़ की रिकमेंडेशन करते हैं. आप मूवीज़ देखें, okay, but except the movies we have different options also. So I am writing the multiple options, and then you will write. You will get the ideas. BBC News we have got cartoons, or we have got radio, XYZ. We have different options. So my dear students, my dear viewers, सुनने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, ठीक है.
movies, news channels. We have got BBC or CNN. We have got different cartoons in English language. We have best option radio. Many good teachers recommend radio listening, so that our normally in a video what happens, our more attention is on the ongoing pictures and the scenery, whatever there is in the tube. टीवी में चल रहा होता है, हमारा ज़्यादा फोकस उसी पर चले जाता है सुनने के बजाय. बट इन रेडियो व्हाट हैपन्स, आपका ज़्यादा फोकस सुनने पर होता है, बिकॉज यू हैव नथिंग टू सी, नथिंग टू वॉच. फाइन. सो सुनने को बहुत कुछ है. इसके अलावा भी आप देयर आर मल्टीपल थिंग्स यू कैन लिसन. As a student, if you are in a class and the teacher is giving a lecture in English, you must listen it carefully. If you are a YouTuber, if you are a person, you have a mobile in your hand, so you can go and explore and watch the YouTube videos in English regarding the topics. If you are a student, you can listen your topic related videos. If you are a science student, so you go and explore like that. It depends on you. What are your favorite areas? आपको जो favorite area है आप उसी के हिसाब से जाएं, explore करें और सुनें. So it will really help you out. Speaking के बारे में मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है. Speaking normally speaking लोग ज़्यादा फोकस करते हैं बोलने पर. As my friend asked that how to be fluent. So बोलना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी जो है ना थोड़ी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है. अपने डर को मिटाना पड़ता है, अपने डर को एक तरीके से बिल्कुल साइड में रखना पड़ता है, अपनी हेजिटेशन को दूर रखना पड़ता है. इसके लिए एक फार्मूला है. फार्मूला ये है कि आप अपने आप को इस बात पर कन्विंस करें कि मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, और मुझे बोलना है, ठीक है. मैं एग्जांपल बच्चे की दूंगा. जो हमारा एक बच्चा होता है जो जिस ज़माने में पैदा होता है, जब हम अपनी ज़बान के एग्जाम्पल उर्दू में, तो बच्चा जब बोलना सीखता है तो टूटे फूटे अल्फाज शुरू में बोलता है, पानी को मम बोलता है, और इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स आप खुद भी जानते हैं किस तरह वो बोलता है. वो घबराता नहीं है, वो हिचकिचाता नहीं है, बस वो बोलता है, ठीक है. फिर आप देखें वक्त के साथ साथ वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू ही कर देता है. तो हम क्या समझते हैं कि हम किसी भी ज़बान को सीखेंगे तो क्या हम डायरेक्टली बोलेंगे, ठीक है. वी आर अल्हम्दुलिल्लाह मेक श्योर आवर माइंड इज वर्किंग, वी हैव गॉट अ फंक्शनिंग ब्रेन. सो आई थिंक दैट we should remove that thought कि मैं नहीं बोल सकता, मुझे नहीं आता, डर लगता है, XYZ, शर्म आती है. तो you have to be mature, you have to tell yourself. कोई कहे या ना कहे इससे फर्क नहीं पड़ेगा. आपको खुद को कहना है कि भाई मेरा या whatsoever your name is, I say myself, Ahmad, you can do it. So take your name, convince yourself and start practicing, start your activity, start speaking, ठीक है. अब सवाल ये है, फिर हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम किससे बोलें, हमारे पास बोलने के लिए कोई है नहीं, हम घर में कोई इंग्लिश बोलता नहीं है, स्कूल में कोई इंग्लिश बोलता नहीं है, लोग हंसते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. Different answers I get from my students. So there is a very simple option. There is a word in English, monologue. What is a monologue? Monologue means giving speech to yourself. आप खुद को स्पीच दे रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं. टॉक टू योरसेल्फ यू कैन से. सो दैट इज़ द बेस्ट आइडिया आई थिंक इन द इनिशियल स्टेज. शुरू में आप खुद से बात करें, ठीक है. देखिए करना पड़ेगा क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब शुरू में थोड़ी सी घबराहट खत्म होगी ना, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, आई बिलीव दैट सबसे बड़ा जो हमारे पास डर होता है या सबसे बड़ी हमारे पास हेजिटेशन होती है, खौफ होता है, वो हमारा खुद का होता है. हम खुद से ही डरते हैं. You believe or not, we fear from ourselves. हम खुद से ही डरते हैं. So डरना छोड़ें और करना शुरू करें, ठीक है. खुद से बात करें अकेले कमरे में या रूफ टॉप पे जाकर, छत पे जाकर, टेरेस में चले जाएं, जहाँ आप और आपके सिवा और कोई ना हो, ठीक है. और जहाँ पर आपकी आवाज़ कोई ना सुन सके. आपको डर है ना कि कोई सुनेगा और हंसी मजाक उड़ाएगा, ले लीजिए. और आपको नहीं है, बाबा स्टार्ट स्पीकिंग. अच्छा, स्पीकिंग के लिए और क्या है, आई वुड सजेस्ट दैट जो भी आप वॉच करते हैं, जो भी आपने सुना उसको बोलें, ठीक है. जो भी आपने, क्योंकि आपके पास कुछ होगा ना जब सुनेंगे आप, तो आपके कान में जो है वो जो आपने जो भी कान से सुना होगा आपकी मेमोरी में होगा,
और आपके पास वही आइडिया शेयर करने के लिए होना चाहिए। आप एक बार दो बार की जो भी सुनते हैं आप एटलीस्ट यू जस्ट टॉक अबाउट इट, ठीक है। क्योंकि उसी के वाले से आपको सेंटेंस मिल जाएंगे, वर्ड्स मिल जाएंगे। सिंपल एग्जाम्पल फाइव गिव दैट मैंने कार्टून देखा, गिव द एग्जाम्पल ऑफ छोटा भीम, ठीक है, वेरी फेमस छोटा भीम। देयर इज एन एपिसोड इन दैट Bhim and Kalia, they started fighting. Just carry on, just keep it up, keep speaking. Whether broken sentence टूटे फूटे गलत हो doesn't matter. आप गलत की जो है ना वो टेंशन ना लें, don't take tension that गलत बोलूँ, just start speaking, ठीक है। So that is how we function. आपको जो आपने सुना आपने उसको बोलना है। अगर कोई पार्टनर नहीं है, पार्टनर है तो you are very lucky, conversate with him or her, या आप खुद हैं खुद आपके लिए आप अपने लिए काफ़ी हैं। Let's talk about reading. What is basically reading? Reading means पढ़ना, ठीक है। अब सवाल है कि क्या पढ़ा जाए और क्या जो है ज़्यादा इफेक्टिव होगा। So I must say that different age groups, different people have different interests, जहाँ पर उन्हें जो है पढ़ने में मज़ा आता है। Some people like reading books, some people like reading newspaper, and some people are like जिन्हें पढ़ना पसंद ही नहीं, ठीक है। So उन लोगों के लिए मैं तो ये कहूँगा कि बेटा पसंद हो, मेरे भाई पसंद हो या ना हो, करना है, क्योंकि आपको सीखनी है, आपको बोलनी है, तो पसंद को थोड़ा साइड में रखें, ठीक है। थोड़ा टाइम कुछ देर के लिए साइड में रखें, क्योंकि इससे आपका काम होगा। क्योंकि अगर आप ज़बान में अच्छा होना चाहते हैं, आप अच्छा लेखक बनना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर के कुछ भी आपको लिखना पड़ सकता है। इफ यू आर डूइंग जॉब, तो बॉस कैन आस्क यू दैट प्लीज रिपोर्ट, प्लीज राइट दिस लेटर और ईमेल, यू हैव टू राइट। इफ यू आर अ स्टूडेंट, टीचर विल से व्हाटएवर यू लर्न जस्ट मेक द नोट्स, सो व्हाट विल यू डू? सो यू हैव टू राइट। सो टू बिकम अ गुड राइटर बनने के लिए reading is condition, so you have to read. So don't worry, reading is not a big deal, reading is not very hard, reading is very simple and very easy, but it takes time, all right? So what to read? I would suggest that for students, I think we should not go out of the context, take it. Students should read their I would say their course books. It's more effective, क्योंकि आप उसी को लेके चलें जो आपको ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े। आप अपने ही सिलेबस में लाइक अपने ही पढ़ाई में आपको ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। अगर आपको कोर्स बुक्स ज़्यादा नहीं भाती, यू डोंट लाइक दैट और यू गेट बोर्ड, what's why that? So I would say you can read story books, fine. People normally like reading novels. It depends on the interest, but the best idea what my teachers give me as a student, as a language learner, he always suggests me to read a newspaper. Newspaper is highly recommended, बहुत ज़्यादा recommend किया जाता है। I would highlight it. For an effective language speaker, you have to be good at reading, and reading a newspaper allows you to get the updated knowledge. What's going on around the globe, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है आपके शहर में, आपके मुल्क में, you get the information. Second, you get the vocabulary. आपको words मालूम चलते हैं, and vocabularies are very effective, right? So newspaper really helps you out. It gets you, you get to learn the different words, new words of English, and you enhance your vocabulary. आपकी vocabulary बढ़ती है। And then writing is sometimes very boring in initial stage, but once you start doing it and you become effective in it, or you enjoy it, that's the best part. So whatever you learn or whatever you listen, start writing. उसी को आप लिखें. Simple, for example, if I just watched a video or a cartoon, I just watched a cartoon, Doraemon or any other cartoon which have dialogues, like Tom and Jerry, okay? Tom and Jerry, you have to, there are no dialogues. That's very effective. It is one of my favorite cartoons. But I'm talking about dialogues, where there is a conversation, there is speaking. So whatever you listen, you spoke out to your friend, your family, or your cousins. आपने बताया, no one, so
So you went to the mirror, you sat on your sofa, आपने अपने आप को ही बताना शुरू किया, ठीक है? And then you started writing. थोड़ा बहुत like I watched a cartoon, Doraemon, in that Doraemon spoke that, आप उसी के डायलॉग लिख लें, no issue, fine, that's it. और मैं एक और एग्जांपल मैं बिल्कुल देना चाहूँगा. Speaking में I just record mimic. Most many language native speakers give the idea or recommend for good speakers or who want to become a good speaker. You should mimic. Mimic means your favorite, like a person whom you like a lot. नेटिव स्पीकर जिसको आप सुनने में मज़ा आता है, आपको उसकी इंग्लिश समझ भी आती है, तो स्टार्ट मिमिकिंग. उसी की आप ना कॉपी करें, उसी के डायलॉग उसी अंदाज में बोलें. एंड आई डू दैट प्रैक्टिस ऑल्सो. So that's basically today's lecture. I guess today's class you can say, or today's idea. And as my friend asked me the question, so I try to give you what I could do. That these things are really effective. And one very important question, like कितने टाइम लगता है हमें सीखने में? So it is very simple answer. जितना ज़्यादा आप वक्त देंगे